हेलो, हेलो, हेलो। जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक के सीएसआईआर नेट प्लेटफ़ॉर्म पर मैं कौशल सारस्वत, फैकल्टी ऑफ फिज़िक्स आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। जो स्टूडेंट लाइव हैं, आप प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझे बताएँ क्या मेरी वॉइस और वीडियो सब कुछ एकदम क्लियर है या नहीं है? साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पार्ट नंबर 3। लास्ट की 2 क्लासेस में हमने बेसिकली वेक्टर्स को भी फिनिश किया है, जिसमें हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि 2 वेक्टर से रिलेटेड जो हमारी फिनोमिना है वो हमारी जो कैलकुलेशंस है उनको भी हमने सीखा है। बट नाउ आज की इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं 3 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट। हालांकि 3 वेक्टर्स का एक स्केलर प्रोडक्ट हम कल की क्लास में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपाइड क्यू जो है कैलकुलेट करना। बट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स? एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है, क्योंकि वहां पर हमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। चलिए, तो क्लास नंबर 3 है सर ये, दिस इज नॉट क्लास नंबर 2, दिस इज क्लास नंबर 3। ओके, सो दिस इज योर क्लास नंबर 3, राइट। सो ये जो हमारी क्लास है आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि 9 बजे संडे टू थर्सडे हमारी ये यहाँ पर क्लास होती है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पार्ट नंबर 3, राइट। चलिए जी, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम पार्ट नंबर 3 की हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द कोऑर्डिनेट सिस्टम पार्ट नंबर 3, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्टली द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। व्हाट? दिस इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। दिस इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट। अगर हम लोग यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जरा ध्यान से समझते। सपोज दैट वी हैव द 3 वेक्टर्स, दिस इज ए बी एंड सी। हमारे पास में यहाँ पर 3 वेक्टर है। अगर मैं यहाँ पर वेक्टर ए की बात करता हूँ तो दिस इज लाइक A1I एंड दिस इज सपोज योर A2J एंड दिस इज योर A3K, राइट। And now what is vector B actually? So this is B1I and this is your B2J and this is your B3K. And what is your vector C? So this is your C1I and this is your C2J and this is your C3K. तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है? ABC। हमारे पास में 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है। इन्हीं तीनों वेक्टर्स का हमें यहाँ पर क्या करना है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करता हूँ, तो दिस इज A क्रॉस B क्रॉस C। सो दिस इज योर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हमें यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज BCA, दिस इज BCA माइनस माइनस दिस इज CAB, दिस इज CAB। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्या होता है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, चाहे हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस की बात करें या वेव में, ठीक है ना, और या हम स्टोक थ्योरम्स की बात करें, हर जगह हमारा ये फॉर्मूला जो है आपका यूज होना ही होना होता है। तो इसलिए आप इसको लिख सकते हो, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले का यूज हम लोगों को करना है और इसके ही आधार पे हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, दैट इज A क्रॉस B क्रॉस C, राइट। अगर आप लोगों को A क्रॉस B क्रॉस C करना है तो हमारे पास में एक दूसरा तरीका है, बट दैट इज द लॉन्ग मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करेंगे? A और B का क्रॉस प्रोडक्ट आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एंड जो भी आपका आंसर यहाँ पर आएगा, then we will again the cross product with the A vector. So that is the long process, but we can also do, okay. But this is the direct formula, because here we are using the dot product actually, okay. So we can do the dot product directly with the 2 vectors, but the cross product is not doing by the direct method, okay. जैसे अगर मैं यहाँ पर 2 वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूँ, so this is like this is AB sin theta and this is your n कैप। लेकिन अगर हमें यहाँ पर ये वाले दोनों वेक्टर्स दे रखे हैं, सपोज दिस इज आर दीज आर द A एंड B वेक्टर्स,
and we are interesting to calculate the A cross of B. तो अगर मैं यहाँ पर A cross B कैलकुलेट करूंगा, so we have the method. क्योंकि ये वाली बात आपको पता है कि हमारे पास में वेक्टर भले ही दो हैं, है ना, लेकिन इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा 3D में जाता है. मीनिंग ऑफ दैट कि 3D में जाने का मतलब क्या है, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल प्लेन में मोशन कर रहा है, सो द डायरेक्शन ऑफ दैट ए क्रॉस बी इज द परपेंडिकुलर ऑफ दैट प्लेन. या हम बीसी प्लेन की बात कर रहे हैं, सो दैट इज द परपेंडिकुलर टू द बीसी प्लेन. एंड अगर हम डीए सीए प्लेन की एसी प्लेन की बात कर रहे हैं, so the direction of AC plane is also the perpendicular to that plane. Okay, so A cross B is what? This is your I, this is your J, and this is your K. So this A is what? This is your A1, this is your A2, and this is your A3. This is your B1, this is your B2, and this is your B3. तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, I J K का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है ना? यस. और जो भी हमारा ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो एक 3D में आएगा. और हम यहां पर सपोज आप यहां पर एक चीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज जो आपने यहां पर ए क्रॉस बी कैलकुलेट किया, इस ए क्रॉस बी को, ये जो आपने यहां पर ए क्रॉस बी कैलकुलेट किया है, इसको आप यहां पर डी वेक्टर मान लीजिए. ठीक है, जो हमारा डी वेक्टर है, एक्चुअली व्हाट इज डी एक्चुअली, तो जो हमारा डी वेक्टर है आप इसका यूनिट वेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हो. सो दिस इज योर वेक्टर डी विच इज डिवाइडेड बाय द मॉड ऑफ द वेक्टर. अगर आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है साथियों, तो आप क्या करेंगे, वो जो वेक्टर आपको यहाँ पर दिया गया है, आप उसी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दो. तो आपको यूनिट वेक्टर का काम होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है सर आपका, यूनिट वेक्टर का काम क्या है, टेल्स अबाउट द डायरेक्शंस. इसका काम क्या है, टेल्स अबाउट द डायरेक्शंस. ठीक है ना, इसका काम क्या है, टेल्स अबाउट द डायरेक्शंस. तो जो हमारा डी कैप वेक्टर है, दिस इज टेल्स अबाउट द डायरेक्शन इन स्पेस. ठीक है ना, ये एक स्पेस में हमें डायरेक्शन यहां पर बताने की कोशिश करता है. और जो हमें ये डायरेक्शन बता रहा है, ये हमारी कहां पर जाएगी, आई जे के में से कोई भी आपका हो सकता है. ये भी प्लस माइनस हो सकता है, ये भी प्लस माइनस हो सकता है, ये भी प्लस माइनस हो सकता है. दैट वी हैव द 6 पॉसिबिलिटीज. We have the 6 possibilities of the direction of any vector in vector space like this when we are using the 3 coordinate system x, y and z, right? तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं. देखो इसका एक और एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है. When we are using the Fleming's left and right hand rule, and we are using these two rules to define the direction of flowing current and charge in a uniform and non-uniform magnetic field. So we can also use the cross product of force and the velocity, and we can easily calculate the direction of that particular electron, because in the magnetic field, now we are talking about the magnetic field. Now we are talking about the magnetic field. So in the magnetic field, what is this? So actually this force F is equals to, this is QVB, and again this F is equals to IBL. Okay, so this is I, this is L cross B, this is L, and this is I cross of B. Okay, because here we are taking the I as a direction. Okay, कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन हमारी जो है वो क्या है. So now we are using this I as a vector in this form. Okay, and the B is showing the uniform magnetic field. Uniform magnetic field. This is showing the uniform magnetic field, right? अब यहां पर आप एक चीज समझ रहे हो, जब भी हम यहां पर इनकी बात कर रहे हैं, जब भी हम यहां पर इनकी बात कर रहे हैं, ये जो दो फॉर्मूलेज हमने यहां पर लिखे हुए हैं, तो इसके आधार पर आपसे क्या बोला जाता है, इसके आधार पर क्या बोला जाता है कि अगर आपको ये दो डायरेक्शंस आपको दे दी, एंड आपसे पूछा गया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जस्ट यू कैन कैलकुलेट, एंड वी हैव द एफ एंड वी डायरेक्शन, देन आपसे बी का डायरेक्शन आपसे पूछ लेगा, यू हैव द बी एंड एफ, एंड आपसे वी का डायरेक्शन पूछा गया. सो आपको पता है वी हैव द 3 पैरामीटर्स, and the 2 parameters are given in your question, and the third parameter will ask you. Okay,
सो आप इजीली यहाँ पर डायरेक्शन को क्या कर सकते हो सर, कैलकुलेट कर सकते हो, राइट. Okay, but this is a very easy question, so I am not discussing about the proper question here because you everyone is calculate the question. What I am saying, are you understand my point? But my point is that now I am going for the discussion for the Maxwell's equation. Okay, आप लोग जानते हो कि जब हम मैक्सवेल से इक्वेशन की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है ना, मैक्सवेल इक्वेशन की हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशन की जब हम बात करते हैं, वी हैव द फोर मैक्सवेल्स इक्वेशन, एवरीबॉडी नो अबाउट दिस. First one is that what is the first Maxwell equation? So that is the divergence of E. So this divergence of E, that is rho upon epsilon naught, and second one is that the divergence of B, that is 0, and third one is that this curl of E, that is equals to minus of del E over del T, and fourth one is that this curl of B, that is equal to mu naught epsilon naught, that is del E over del T. So my dear friends, we have these four Maxwell's equation in free space, and I think everybody know about this. Just we can change these equation in integral form also, because now I am write these equation in a differential form. So these are the differential form of, these all are the differential forms of Maxwell's equations. Okay na, Maxwell's equations. So these all are the differential form of the Maxwell's equations. Okay, now just we can convert these four equations into the integral form also. But my question is that what is the question now, why I am discussing these equations here? So my question is that then we are taking the curl of both the side of the equation number third and fourth. This is the equation number third and this is the equation number 4, and this is the equation number 1 and this is the equation number 2. But today now we are not discussing about the Maxwell's equation, but I am gives you a brief knowledge about the all the equations. This equation is showing the Gauss theorem. Okay, this is showing the Gauss theorem, and this is the Gauss theorem in magnetic field, and this is showing the no one pole is not exist. This is showing the one pole is not exist. One pole is not exist. ठीक है ना, one pole is not exist, right? And this is the Gauss theorem. This is the Gauss's theorem या Gauss's statement. Okay, and which one is what? This is the Faraday equation. This is the Faraday equation. दिस इज द फेराडे इक्वेशन. ओके, अब यहां से आप एक चीज को ध्यान से समझ लें, एंड फोर्थ वन इक्वेशन इज द गिब्स पैरामीटर, राइट. अब यहां से आप एक चीज समझने की कोशिश करेंगे साथियों, अगर मैं यहां पर इक्वेशन 3 की बात करता हूं, सो देयर आर ए कर्ल ऑफ द ई एंड दिस इज द कर्ल ऑफ बी. So this is the curl of two vectors, and everybody know what is the cross product of two vectors, and everybody can solve. But we are interested only one thing, what is the equation of electromagnetic wave. Okay, so my question is that what is the equation of EM wave? What is the equation of EM wave, right? So to calculate the equation of EM wave, so we are taking the curl of the equation number 4 both the side. So I am writing again equation number 3rd. So this is curl of E, that is equals to what? This is minus, this is del B over del of T. This is your equation number 3rd, and the curl of B, that is equals to what? This is minus, this is mu naught epsilon naught, this is del E over del T. So my dear friends, just we can take the curl of equation number 3 or equation number 4. So first of all, we are taking the curl of equation number 4 both the side. Taking curl of equation 4 or equation 4 both side. Okay, so now this curl of B, this is curl of B, that is equal to what? This is
mu naught epsilon naught, this is del over del t, this is curl of E, right? So everybody know we are taking the curl of both the side. So what is this actually here? This is the uh, triple vector product. This is the triple vector product. And now we can put the value of curl of E from the equation number third. So we using equation third. We using equation number third. And what is this actually here? So this is BAC. So this is curl, this is BAC, and this is the divergence of V. Okay. Oh, okay. And minus this is sorry, this is CAB actually. This is CAB. This is CAB. So this is your del dot del. एक मिनट, ABC था ना, ABC. So this is BCA. So this is BCA. Okay. Minus this is CAB. So that is equals to what? अगर मैं इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, so this is minus, so we can get minus, this is mu naught epsilon naught, and this is again del over del t, this is again del over del t, so this is del to E, so this is del to B over del T2, right? And this will be 0. This will be 0 because everybody know the divergence of gradient of any function that always equal to 0, right? So just we can write now, this is del to B, that is equals to minus, this is mu naught epsilon naught, this is del to V over del T2, right? So this minus is cancelled with this minus, then we get the equation, this is del to V, that is equals to mu naught epsilon naught, this is del to V over del T2, right? So this is the wave equation. This is the wave equation. कौन सी wave equation है? This is the EM wave equation, and we are using the B as a component. Okay. So this is the magnetic field equation. This is the magnetic field equation. This is the magnetic field equation, and you know this mu naught or epsilon naught, that is equals to 1 upon c square. So this c is just assumed as 1 upon root of 1 upon mu naught epsilon naught. So we can replace this value mu naught into epsilon naught by 1 upon c square in this equation. So we get this del to V, that is equal to what? This is 1 upon c square, this is del to B over del T2. My dear friend, everybody know the meaning of del in the every equation is showing the differential equation with respect to position actually, right? So this del is nothing, this is your Laplacian. This is nothing, this is your Laplacian, and this is the very fantastic mathematics here, because you can use this Laplacian in your Cartesian coordinate system, also in the spherical coordinate system, also in your cylindrical system also. So my question is that if you are really very good to learn the every formula in all the coordinate systems, so that will give you a very helpful mentality in your questions, right? So this is your Laplacian, right? So this Laplacian in your Cartesian system, right? This is del 2 over del x2 plus this is del 2 over del y2 plus this is del 2 over this is your del z2. In the x, y, z coordinate system, that is known as the Cartesian coordinate system. But in the spherical coordinate system, where just we can write this is 1 upon del over del r square del over del r, this is r square, this is del over del r, right? So this is again we can write this is 1 upon r square sin square theta sin theta, this is del over del theta, this is sin theta, this is del over del theta, plus this is again r square, and this is your sin square theta, this is del 2 over del phi of 2, right? So this is the Laplacian in your spherical coordinate system. This is in your spherical coordinate system, and this is in your Cartesian system. But in the
but in the cylindrical coordinate system, this Laplacian is like that, 1 upon r square. This is del over del r. This is r square del over del of r. This is again 1 upon r square. This is del over del of phi, del 2 over del phi 2, plus this is 1 upon del 2 over del z2, del z2. So this is in your r, phi and z. So my dear friends, this is showing the Cartesian coordinate system. This is showing the Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system, and this is showing the spherical coordinate system. This is showing the spherical coordinate system. This is spherical coordinate system, and this is showing the cylindrical coordinate system. This is showing the cylindrical coordinate system. This is showing the cylindrical coordinate system, right? So देखो इक्वेशन कहां थी, क्या पढ़ रहे थे और क्या कनेक्ट हुआ, दैट इज अमेजिंग मैथमेटिक्स, है ना? आर यू एग्रीड विद दिस और नॉट? एक्चुअली हमारा आज का काम इनको पढ़ने का एक्चुअली था ही नहीं. we are really not studying about these points, but the points are related to these points, so that is good. इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे चीजों को कि why the coordinate systems are important. ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आनी है, क्योंकि डेल स्क्वायर को हम लोग लाप्लासियन बोल रहे हैं, राइट? सो ईएमटी में आपका जो ईएम वेव का कॉन्सेप्ट आएगा, एवरीवेयर द डेल स्क्वायर मींस द लाप्लासियन इज अ रियली वेरी गुड. ओके, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है इधर, राइट? सो यहां से अगर देखो मैं एक और चीज देखता हूं, अगर मैं यहां पर इसको लिखता हूं, दिस इज डेल टू बी प्लस दिस इज 1 अपॉन सी स्क्वायर, so this is del 2b over del t2. एक्चुअली जो ये डेल है, अभी हमने इसको बोला कि अगर इसको हम किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करते हैं, लाइक कार्टेशियन में कर लो, स्फेरिकल में कर लो, या फिर आप इसको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन कर लो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. ओके, एक्चुअली अगर आप इसको एक जनरल टर्म में करते हो, so that you can write this del 2 over this is your del r2 b, that is equals to this is your c square, this is del 2b over del 2. एक्चुअली आपने एक चीज पढ़ी होगी जब आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे. हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडीज सीरियसली अबाउट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस? प्लीज टेल मी, partial differential equations. Anyone tell me partial differential equations? Partial differential equations. देखो, जब भी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की यहां पर बात करते हैं, तो एक्चुअली जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, दैट इज नथिंग एक्चुअली, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशंस. जस्ट वी कैन राइट this is the combination, this is the combination of, this is the combination of more than one, this is the combination of more than one, this is the combination of more than one independent डिफरेंशियल इक्वेशंस. ठीक है ना? अब जो इंडिपेंडेंट वर्ड हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी हैव द मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन द इक्वेशंस, लाइक एक्स वाई जेड, आर थीटा फाई, आर फाई जेड, राइट? तो यहां पर अगर मैं इनको देखूंगा, अगर हम लोग यहां पर इसके बारे में बात करते हैं, अगर हमने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन देखी, सपोज दिस इज y1, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज ए फंक्शन ऑफ x, just you can use and get the solution, right? And other function is y1, this is the function of suppose of z, right? आपने इसको भी सॉल्व कर लिया. आपने कोई थर्ड इक्वेशन देखी, this is also y1 and this is a function of p, आपने इसको भी यहां पर सॉल्व कर लिया. You have a lot of 1000 number of differential equation
solve when you have only one independent variable. But my question is that when you have the equation that is the function of x, y, z and so on. So what is the solution when a function is at an instant x, y, z and so on? More than one variables are combined in this equation. So we don't have any direct method to calculate the solution of this equation. So firstly, we will break this equation into single variable equations like that. This is your f of x, this is your f of y, this is your f of z, and so on, so on, so on. Right? Everybody know now? So what is the solution? Yes, we have. What is the solution? Yes, we have. Yes, we have. And what is the solution? Yes, we have. So we have the single variable differential equation. And finally, we have the combined solution of this equation. So then we will multiply. Okay. So what will be the final answer? So that is your y1. This is multiply by y of 2. And this is y of 3 and so on. So the multiplication of the separate solutions, then we get that solution of our partial differential equation. Why I am talking about the partial differential equation now? Anyone tell me why I am talking about the partial differential equation now? Please. Because this equation is not a simple equation. This differential equation is not a ordinary differential equation. This is not a ordinary differential equation. This is a partial differential equation. This is a part of PDE, partial differential equation. If you don't have the solution, the method to how you will solve the PDE, then you can never be solve the first one Laplace equation, second one in electromagnetic wave solution, and third one in hydrogen problem, and fourth one is harmonic oscillator problem in quantum physics. So we have 5 to 6 methods that are directly connected to this method. If you don't have the method to how to solve this method, then you can never be solved. So that is the backbone. Okay. So आपको ध्यान से समझना है, this PDE is not a simple mathematics. PDE is not a single topic. PDE is a 20% physics, right? So आपको प्लीज मानिए मेरी बात को, आप PDE जो है बहुत अच्छे तरीके से जरूर पढ़ें. ठीक है? Yes. Anyone have doubts, then you can mention in your comment section. And you are not live right now and you want to ask your problem, just you can join this Telegram channel, that is Kaushal Sir Testbook. So that is the group. There are a lot of physics students join my channel. So just if you will be mention your question in there, then I will reply you there. Okay. So this is a partial differential equation. So using the partial differential equation method, then we have the solution of this equation. Same as we have also a solution of electric field part of a wave, right? So इस तरह से हम लोग चीजों को समझ सकते हैं. देखो जब भी आपसे partial differential equation की बात की जाएगी, that time we have the diffusion equation also. That time we have a heat equation also. That time we have a wave equation also. So this is a part of a wave equation. Then diffusion equation, that is Higgs law. Who one knows what I am talking? Where is diffusion? Diffusion basically using statistical physics, advanced statistical physics. After Ising model, we studying about the what is this? Diffusion actually. Okay, so diffusion constant, we take the diffusion constant like D, capital D is a diffusion constant. So वहां पे भी हम लोग इन सभी इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है ना? तो उसके लिए भी हमारे पास में एक तरीका है, लेकिन जब हम डिटेल में तभी जाएंगे जब हमारे पास में एक प्रॉपर मेथड होगा, एक प्रॉपर टाइम होगा, वो भी किसके लिए? पीडीई के लिए, प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए. ठीक है? तो शुरुआत हुई थी हमारी कहां से? क्रॉस प्रोडक्ट से, और हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं. ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट योर कार्टेशियन सिस्टम.
ओके, सो नेक्स्ट क्लास में जब भी हमारी बात होगी तो मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की आपसे बात करूंगा। स्फेरिकल पढ़ेंगे, सिलिंड्रिकल पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, रिलेटिव फिजिक्स के फिनोमेना भी हम आपको पढ़ाएंगे और उसके बाद में हम चीजों को आगे कनेक्टेड करते हुए पढ़ते चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें। कोई भी डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम पर पूछते रहेंगे। आशा करता हूं कि क्लास पसंद आई होगी। क्लास को जरूर लाइक करें और क्लास को शेयर भी करें। थैंक यू।